Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome to Crack Grade B. I am Niharika John Mehra. इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड प्लीज़ लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं, आप मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हो कि let me know in the comment. All okay, thank you so much. How are you? That means hi. I am recovering. I'm still having congestion and a little bit of cough, but better than yesterday. And we are going to continue our session, so do not worry about the classes. अभी यहाँ पर हम थोड़े दिन और continue कर रहे हैं. Okay, so quickly we will be starting doing the questions. कल जहाँ पर हमने छोड़ा था where we were doing multiple errors. So you see any way around when the question is asked based on grammar, वो हमें बनना चाहिए क्योंकि ग्रामर यहाँ की वहाँ नहीं हुई है, राइट? दैट रूल इज स्टिल द सेम रूल. Verb third form is used as adjective. Adverb explains any other adjective. These are examples. So this is what we have to check in sentence. And हम इतने sharp हो जाने चाहिए exam तक that in 15-20 seconds as we just have a look at the question, वी नो कि इसमें क्या एरर है क्या नहीं, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा. इतनी एक्यूरेसी शार्पनेस जो आएगी. ऑफ कोर्स यू शुड बी कवरिंग आवर कोर्सेज जहाँ ग्रामर है, स्टेप बाय स्टेप रूल्स एक्सप्लेन करे हुए हैं, एंड उनके एप्लीकेशन में राइट नाउ वी आर टेकिंग गुड टाइम, आ स्वीट टाइम कि क्वेश्चन को करें. बट देन टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन, विच एवर एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर दैट एकदम हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं मिनिमल टाइम में करें एंड फुल एक्यूरेसी के साथ करें. सो कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग. ओके, बहुत सारे पार्ट्स हैं सीरीज के एरर डिटेक्शन के एंड आई वांट यू ऑल टू कवर ऑल दोज क्वेश्चंस. ओके, फटाफट लाइक और शेयर कर दो जब तक मैं लगाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ओके, द आंसर इज नो एरर. क्या एरर दिख गया? एरर होना भी तो चाहिए. डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं देता है, बिल्कुल सही. दिस इज द वर्ड जिसके क्वेश्चन आता है. डिस्पाइट द फर्स्ट केस in humans being reported in 1970, the virus becoming endemic in about a dozen countries in Africa. कहाँ हो रहा है अफ्रीका में? डजन है तो प्लूरल है. Very little attention has been paid despite all these things. तो डिस्पाइट से लेके यहाँ तक जो है, इट्स द कंडीशन ऑफ डिस्पाइट. ओके, बिकॉज लाइक वाई एंडेमिक में गलती क्या है? पैंडेमिक और एंडेमिक दोनों ही आपके पास में जो है, यू हैव एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स एज वेल. सो एज सच ग्रामर कोई मिस्टेक नहीं है ना वहाँ. Very little attention has been paid to study the virus characteristics.
होस्ट एनिमल एंड ट्रांसमिशन, कैसा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, हैज बीन के साथ में पैसिव में बात हो रही है तो हैज बीन वर्ब थर्ड फॉर्म है, देयर इज नो एरर. Okay, so the answer for this one is D. Can you tell me the errors? Yes, D is the answer. Before I tell you the corrections, आप मुझे बताओगे कौन सा word है गलत जो यहाँ पे है. First and the fourth one. क्या होना चाहिए? Have होना चाहिए. अच्छा, have been paid गलत है. Okay, yes, absolutely right. And the first one? Answer is first and the fourth. Definitely. While China was rightly criticized, when नहीं, when हमेशा एक time related situation होता है. So while China was rightly criticized for keeping the COVID outbreak a secret for weeks, while one thing was taking place, not just happened at a point of time, the developed countries have paid scant attention, scant means very less, to stop the outbreak in Nigeria. अभी यहाँ पे have been नहीं आएगा because attention का काम जो है पे वो ये कंट्रीज खुद कर रहे हैं. इट इज इन एक्टिव वॉइस. Quite strange. That is absolutely right. And the other one, answer is a B. For this one, the answer is B. So you can see here, wow, I'm hardly contested. Even though nothing was seized from Mr. Khan, even though है तो opposite चीजें मिली. The agency made sensational claims in the court about his being part. Okay, see, there is a rule. वो rule ये बोलता है if there is a gerund, okay, if there is a gerund, before that gerund and there is a pronoun, तो वो pronoun जो होता है वो होता है possessive case. Okay, so that case possessive. यहाँ पर his आना चाहिए था, him गलत. For example, my taking classes helps me doing ABCD.
her going to gym is for her own benefit. तो जब भी एक gerund आता है मेन वर्ड में, gerund is the ing form of verb जो noun के जैसा काम कर रहा है, और उसके पहले अगर प्रोनाउन आया वो हमेशा possessive form में हो. Okay, so यहाँ पे his है. This is a very important rule, um, and this is used to create tricky questions of an international drug trafficking network, and quite strangely कि क्वाइट है उसको और समझा रहे हैं. तो क्वाइट स्ट्रेंजली इट्स एडवर्ब जो की जरूरत है. साइटेड मैसेजेस purportedly exchanged on WhatsApp as evidence, as what noun है. एक्सचेंज कहाँ पर हुआ? ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो वो भी बिल्कुल ऑन सही है. सिंगल एरर्स. It is good that agency made amends. Amends for what? For mischief. Amendment. एजेंसी अमेंडमेंट कैसे करेगी? अमेंडमेंट्स बहुत ही टिपिकली कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों में ही होते हैं. इट इज़ गुड दैट दी एजेंसी मेड अमेंड्स फॉर. अमेंड्स मतलब कि यहाँ पर उन्होंने शायद माफ़ी मांगी या ऐसा कुछ करा जो कि द पर्सन डज व्हेन he or she accepts that he or she is guilty. So amends for mischief done by the initial set of investigators. How? By applying the standard of proof beyond reasonable doubt while presenting its final report. Now, set of investigators की बात हो रही है. Okay, now please understand. यहाँ पे their final report हम नहीं बोलेंगे, हमें इट्स बोलना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स तो ह्यूमन है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स. तो द नाउन दैट इज प्राइमरी ओवर हियर, और जो फाइनल रिपोर्ट है दैट इज वन रिपोर्ट बाय ऑल ऑफ देम. दैट्स व्हाई यहाँ इट्स आएगा, देयर गलत था. ओके. While strict action is warranted if any officer, singular आएगा, is found involved in what? In fixing someone. It is also time. There are two phrases, okay? It is
time and is high time. Okay? These are two places जहाँ पर हम आगे वाली बात simple past tense में. Okay? So it is high time we took our studies seriously. It is time that the government came out, not comes out. Okay? This is the rule. It is just followed as it is. With a legal framework for what? For compensating. Compensating what? Those people jailed without proof. तो यहाँ those people बोलने की जरूरत नहीं है. It is understand. Okay? And यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, it is time के कारण गवर्नमेंट के बाद simple past tense का यूज कर रहे हैं. Okay. Give me the correction also along with the answer. I'll repeat the rule. I'll do it along with explanation of this question, okay? Currently, Section 358 of the CRPC, अभी section singular है तो provides for a paltry fine to be imposed on whom? On a person on whose complaint, जिसकी complaint, on whose complaint a person is arrested, है ना? By whose नहीं, उसके द्वारा नहीं है, जिसकी complaint पर arrest करा जा रहा है. तो on whose complaint, पर के लिए on सही है. A person is arrested, and arrested how? Without sufficient grounds. So, former president, for example, came over नहीं, घर पे नहीं आए थे वो मेरे. Okay? He came over my place last night. वो मेरे से मिलने आया था थोड़ी देर के लिए. So he came away frustrated after. But come away frustrated means that was how he was depicted. That's what happened. That's how he looked frustrated after Hill rejected no fewer than. Fewer than ही तो आएगा क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो 17 अटेम्प्ट से काउंटेबल की बात कर रहे हैं. काउंटेबल है तो फ्यूअर आया एंड नो फ्यूअर देन यहाँ पे फ्रेज के समान यूज हो रहा है. कुछ नहीं तो 17 तो थे, मिनिमम 17 were there by his White House to bring common sense gun control to the floor of Congress. Okay. And also you asked to repeat that rule. So the rule says whenever your phrase, your sentence starts with it is time
or it is high time, giving you the meaning कि अब बहुत देर हो चुकी है. In that case, the sentence after this phrase is in simple past tense. ये rule है. Okay? Come on. This was so easy. Clearly, certain kinds of basic public health work, kinds, plural, are fraught के साथ with लेता है parallels, in several के साथ plural आता है continents across the world. इतना छोटा सा sentence में कैसे? Why you want to change kind? See, do you have a reason कि kinds plural नहीं हो सकता? Is there any place where kinds plural use नहीं होता है? Certain kinds means there are some of the types of basic public health work. So if you don't have a particular reason to make a plural singular, then why are you changing that? To correct the verb ना, subject verb agreement में पहले हम verb देखते हैं. And only आपका subject तब आप change करोगे when you are very sure कि अरे ये word तो plural हो ही नहीं सकता. Okay, this is how it is to be done. Or this one will be something that everyone gets right. Very good. While cheerleading about the award, cheerleading is rightfully reaching a crescendo. What matters is what matters to whatever matters. Complex subject है is how the Indian government serves singular है तो its health workers who are its feet on the ground. Government की feet on the ground. Once the dust raised by their recognition, dust has settled down. तो remaining part बिल्कुल absolute right. इतना बड़े क्वेश्चन में you got it right. वो पिछला तो छोटा सा क्वेश्चन था उसमें you messed up.
Recognition very often goes to those at the top of the pecking orders नहीं, ये पैकिंग ऑर्डर एक फ्रेज भी है और एक टर्म भी है. पैकिंग ऑर्डर इज द हायरार्की. तो ऑर्डर्स नहीं कर सकते हम उसको. ऑर्डर का प्लूरल ऑर्डर्स होता है, बट ये वो टिपिकल ऑर्डर वाला मीनिंग नहीं है यहाँ पे. ओके, तो ऑर्डर एंड स्टेज देयर, whereas credit seldom trickles down to the worker. स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, एट द बॉटम पे जो भी बचा हुआ वर्कर है. यस, देयर कुड बी मल्टीपल, पर हम एक पैकिंग ऑर्डर बता रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ वी आर कंसिडरिंग एक एक वर्कर एट 1 1 1 1 लेवल. तो वो जो सेंस है दैट इज स्टिल कंप्लीट, जो हम द वर्कर बोल रहे हैं, जो भी काम करने वाला एट द बॉटम है. सेल्डमली नाम का वर्ड होता है. देयर इज नो वर्ड लाइक दैट. सेल्डम अपने आप में एक एडवर्ब है. ओके, डोंट ऐड एल वाई. I mean to say, formal English we follow seldom. Okay, and that's what we follow in exam as well. Informally, you can use it. I'll give you the complete explanation. You need to give me the answer first. Answer is B. After a brief lull here is pause, एक break लेना थोड़े समय के लिए. As a noun use हुआ. It is also an adjective. Adjective वाले lull का meaning होता है काम होना, तभी तो हम lullaby बोलते हैं. After a brief lull break, the Bay of Bengal arm of the southwest monsoon has stirred into action, not stirred to. एक कन्वर्ट हो रहा है एक्शन वाले फॉर्म में. कन्वर्ट के सेंस में हमेशा इनटू आता है. एंड एंटर्ड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इज सेट. ऑफ कोर्स यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं मॉनसून सिंगुलर की बात हो रही है. तो इट इज सेट टू ब्रिंग हैवी रेन्स over Assam and Meghalaya over the next 2 days, and ऐसा IMD ने बोला है. Okay, very good. तो ये जो एक फॉर्म होता है when you are using in a way direct narration. तो said on Thursday या कोई भी डे को कहा, that is absolutely fine. Then you are using any day, जो भी हमारे डे हैं, as a noun जब आप on लगाते हो. At the same time, the days can be used as adverbs. कुछ रेयर टाइम्स होते हैं जब एडवर्ब्स के तरीके पे, जैसे होम वर्ड है. आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू माई होम. तो होम वर्ड भी नाउन होता है, एडवर्ब जैसे भी काम करते हैं. यहाँ पे ये एडवर्ब काम कि कब कहा, सेड व्हेन. सेड इज द वर्ब, वर्ब को समझाने का काम. थर्सडे उस कॉन्टेक्स्ट में इज. ओके, तो हमें कब देखना है that there is an error. So any day, if there is any other preposition but uh, on, तब आप बोलोगे कि वहाँ एक गलती है. ओके,
Under the influence of monsoon westerly winds को समझा रहे हैं हम, westerly भी adjective है, monsoonal भी adjective है. From the Arabian Sea, a classic error. कोई भी sea, ocean, river के नाम के आगे हमें the लगाना mandatory होता है. So the urban sea over the South Peninsular India. पहला तो the आएगा, फर्स्ट में error है, ये तीन ऑप्शन. The weather ऑफिस हैज फोरकास्ट. फोरकास्ट का फॉर्म तीनों ही सेम होता है, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, फोरकास्टेड नहीं होता. कास्ट का भी फॉर्म तीनों सेम होता है, फोरकास्ट का जो अकेला कास्ट है, कास्ट कास्ट कास्ट. ओके, सो फोरकास्ट थ्री फॉर्म्स, ऑल द कॉन्जुगेशन. Fairly widespread rainfall over coastal and south interior Karnataka and Kerala, Lakshadweep, ये सब नाम है आपके लिए. आप and over the next 5 days, 5 है तो days आएगा. So simple. हाँ. Answer is no error. Maximum temperatures have been rising. Temperature का usually plural नहीं होता है, but we use this term temperatures. We mean maybe अलग अलग समय पे लिए हुए, अलग अलग वीक में, अलग अलग डेज पर, अलग अलग जगहों पर. Maximum temperatures have been rising gradually over the northwest India, and the weather office singular has issued warnings एक से ज़्यादा over Rajasthan, South Punjab, South Haryana over the next 2 days. ओवर का यूज यहाँ पे हुआ है क्योंकि उन दोनों दिन में कभी भी वो हो सकता है. इट्स ओवर अ पीरियड एंड दैट्स व्हाई नो. लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए. Taking a lot of my energy to take class, so it would be good to have more people here to encourage me. Very good. Spot on. The weather office had upgraded its forecast. अभी ये noun वाला forecast है. Okay, so this word is verb and noun है. सीखते जाओ सारी चीज.
for a normal monsoon this year on Monday and said that monsoon rains would be fairly well distributed. क्योंकि well distributed ऑलरेडी एक एडवर्ब एडजेक्टिव का पेयर है, तो अभी फेयर नहीं बोल सकते. फेयर अक्रॉस द कंट्री विल गिव यू नो मीनिंग. नाउन तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो इस वजह से फेयरली इसका नाउन पहले ही यहाँ पे आ गया है वर्ब के, सो डेफिनेटली एडवर्ब होना था. एक्सेप्ट वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट किसी चीज को ग्रहण करना, वी आर टॉकिंग अबाउट apart from something, so that would be ex इथी. In northern eastern parts of country, extreme southwestern peninsula. Oh, liking this. एक ही आर्टिकल के हैं. So southwest monsoon has further advanced, आगे की ओर, not sense of a distance, into some parts of northwest Bay of Bengal, some more parts of northeast, and see, we are giving a fact here. There is no choice this place or that place. It's a forecast related thing, and that's why and आएगा, or makes no sense here. And most parts of Mizoram, Manipur, etc. इतने सारे नाम हैं, तो उसमें तो आपको वैसे भी error नहीं मिलेगी. So first and the second one, very good. So people are able to tell, like, most of the questions one error is for sure जो आप समझ पा रहे हो and you know the correction. For the second one, there is a little struggle, but I believe with the regularity of you people coming to classes, you will be able to get the question spot on, like both the errors. Even if there are multiple errors, you will be able to go with all of them. And the correction also आप लोग बिल्कुल सही बता पाओ. सिंपल वाले पे आ जाते हैं, सिंगल एरर. The stars in their wardrobe is all about, the wardrobe is all about incorporating this पहनने वाले भी that boast, plural है तो boast, exquisite craftsmanship and effortless elegance, no, not elegant of course, because we are talking about a noun, and elegant के बाद में फिर एक और noun होना चाहिए है,
तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा. वेरी गुड. क्या या डी में ऐसा क्या बिगाड़ दिया डी ने? हाँ. Even her latest look as a noun for a photo shoot in a blueprinted sari. Blueprint sari कैसे? We need word third form to explain a noun क्योंकि as an adjective काम कराना है is proof of the same. So if you are thinking of investing what in a timeless drape yourself, you are thinking of doing something yourself, don't forget to take tips from the diva, from someone taking tips. Don't के साथ verb का first form. Everything is so good here. These are my answer. Okay, A is the answer. और यहाँ पर जो बात हो रही है, one thing is to go by word or phrase by phrase when you're checking. In this case, just have a look at the complete statement. Madhuri styled the traditional look by choosing minimal, एक negative tone में काम, and striking. अगर आप and से दो चीजों को जोड़ रहे हो, they should have similar tone. पॉजिटिव है तो एंड के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव है तो एंड के बाद नेगेटिव. तो मिनिमल बोल के आप फिर एंड कैसे बोल सकते हो? स्ट्राइकिंग एक्सेसरीज टू कॉम्प्लीमेंट हर लुक. कॉम्प्लीमेंट मीन्स गिव सपोर्ट. PLE वाला, PLI वाला कॉम्प्लीमेंट जो हम एक दूसरे को देते हैं, तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट. तो माधुरी स्टाइल द ट्रेडिशनल लुक बाय चूजिंग मिनिमल yet striking accessories. तो मिनिमल तो है फिर भी बहुत अच्छे हैं. वी वांटेड दैट कॉन्ट्रास्ट हियर. तो येट हो सकता था, बट भी हो सकता था, हाउएवर भी हो सकता था. येट गोज परफेक्ट बिकॉज दो सेंटेंस नहीं, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं. शी ऑप्टेड फॉर मैचिंग feathers, a statement gold ring, an ornate bracelet, gold bracelet, and pretty jhumkis with pearl adornment. Okay, so the nouns are there, like many nouns along with the other nouns, compound nouns आपको मिल रहे हैं यहाँ पे. So that's all okay.
आंसर इज डी. गुड ऑब्जर्वेशन कि 21st के पहले द नहीं लगा है. ओके, बट हम यहाँ पे 21st रैंकिंग नहीं दे रहे हैं. देखो, द यूएस एंड ताइवान अनाउंस द यूएस इनिशिएटिव ऑन ट्रेड. अभी ये ट्रेड नाउन है. ये ट्रेड कौन सा है? 21st सेंचुरी ट्रेड. सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी. आप ट्रेड की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको द लगाने की नीड नहीं है. आर्टिकल तब लगता है यहाँ पे व्हेन यू आर सेइंग इन द 21st सेंचुरी ABCD इज हैपनिंग. तो यहाँ पे उसकी नीड नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ. दिस हैपेंड ऑन वेंसडे एंड only days after Biden administration kept Taipei out of what framework? Framework कैसा? Which includes India, designed to counter Beijing's grown influence तो already grow हो चुका है. Does that make any sense? Growing influence, grow होता हुआ influence. We want present participle as adjective. Beijing and Washington, though had to have lately very good, been locked in angry exchanges because of the latter's Washington's increased engagement later. जो दो में से सेकंड वाला होता है के लिए हम बोलते हैं latter. अभी ये है एक एडवर्ब. अभी वो एडवर्ब है तो यू कैन नॉट यूज apostrophe s यूजुअली. बट अगर अंडरस्टैंडेबल नाउन है, लेटर वन बोले, लेटर सिटी बोले, तो उससे बेटर है कि हम लेटर बस बोल के आगे की चीज बोले, ससिंक्ट वे में बात कर दें. तो apostrophe s you are using in just this condition जो बहुत कम होता है, but then again it is acceptable and correct. बट latter आएगा, later नहीं आएगा. Increased engagement with Taiwan, with China. China claims as a breakaway region. ये सारे ई वाले सपोर्टर्स हैं. I didn't realize. Okay. Answer. The US should handle, ऐसे prudently handle trade and economic ties, noun वाला type, with Taiwan to avoid what? Sending what? A wrong message. To whom? Can send this to someone, so that goes correct. To Taiwan separatists, and this is in your inverted comma. This is a direct sentence. Said Chinese Commerce Ministry spokesperson. ये उनका टाइटल है, तो आपको कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं बनाना है.
at a press conference, and this happened on Thursday. So everything is spot on. On Tuesday, US, okay, US Defense Secretary Austin indicated, happened to my pen, indicated Washington was willing to expand arms, eight arms, ammunition wale arms, and military training, and this is expanding something for something. Taiwan in response to, noun चाहिए, responder नहीं आएगा. Respond is verb, response is noun. So in what का आंसर हमेशा noun होता है. In response to China का aggression, एंड अग्रेशन टू नहीं होगा, अग्रेशन किसी के अगेंस्ट में जाएगा, against Taiwan. So all those said against, absolutely right. In an interview to Japanese, that's it for today's session. That's all I can take. Can't take it for long. Anyways, so maybe we'll do a couple of more parts. Tell me something. Which other topic would you like to practice here? और क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहोगे? So we have, I'll tell you, if you are new, आपको नहीं पता है, so RC मत बोलना. RC के लिए better, we can do RC here, but YouTube पर RC तब properly हो नहीं पाता है. Better are proper classroom classes, online classroom classes. We can have fillers, we can have fill in the blank, we can have fillers, fill in the blanks are the same thing. Parajumble जहाँ पर sentence arrange होता है. Then there is a popular topic of close test जो कि paragraph वाला fill up होता है. And then you have miscellaneous questions जैसे match the column है, synonym, antonym, and spelling misspelled words हैं, spelling related questions and vocabulary based questions in English. ये सभी आ जा रहा है. Okay, match the column and also please tell if there is any other topic तो आपको और parasymbol, EJ comprehension, let me see how to like go with this option of RC. पढ़ना काफ़ी पड़ेगा और वो छोटा छोटा हो जाता है फॉन्ट, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज वी कैन डेफिनेटली गो अहेड विद, बट आई विल स्टिल ट्राई. EJ क्लोज टेस्ट, तो आप भी आओगे और आपके दो और peers को लेकर आओगे. pyramid scheme. Anyways, I was just kidding. Please come along with your friends to attend classes. And yes, maybe tomorrow let's take paratumble for a change, huh? Today was which part? Part 9. So if not tomorrow, then day after tomorrow. Let's complete 10 sessions of error detection. कल और करते हैं error detection, and फिर हम parajumble करके और फिर दूसरे variety करेंगे. Okay, but your job is to be here regularly, attend the classes sincerely और participate करो ऐसे ही answer देने में.
जिससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू टुमारो. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं करा है, शेयर करना ना